Now come to your service. Okay, सर्विस में तो आई थिंक पहले 4-5 में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो आई थिंक पहला 3 सर्विस आई से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में यू कैन ऑलवेज रोटेट अराउंड. पीपल आर स्कैर्ड जनरली कि सर अगर आईपीएस डाल दिया क्वेश्चंस क्या पूछेगा, या आईएफएस डाल दिया कैन जस्टिफाई और नॉट. ओके, दैट शुड नॉट बी द इशू. Okay, and the moment you put IFS at third or fourth में automatically IFS is out. ठीक है, so अगर आपने IFS को डाल दिया third fourth में डाल दिया automatically आपने cancel कर दिया उसको. Then students are concerned कि sir if they ask us why am I leaving IFS, we'll find an answer to that. Okay, but go by what you really want to work for. Just because you can't answer a question, या answer आपका ready नहीं है, should be no reason for you to okay, accommodate your service preference. ठीक है, go by what you. So पहला 3 में दिक्कत नहीं है. Fourth, fifth, sixth में 3 services you can play around with: revenue, customs excise, and audit account. A lot of students make a mistake of putting audit account काफी नीचे. Don't do it. It's a pretty influential one. It has lot of powers. In fact, I think that is one service that has the ability of entering any service for auditing. Okay, so जो आपको चाहिए in terms of influence in the government circles. तो public dealing ज्यादा नहीं है इसमें. That's okay. Otherwise, you are fairly influential. Audit account को नीचे मत करना. That's my choice. So if I was filling up, maybe IAS first, IPS 2, IFS 3 maybe. Okay, then I could fourth में I could put audit account also. Like it's as powerful as that. So fourth, fifth, sixth में you can play around these 3. अच्छा, एक और डिबेट हुआ है around revenue service कि over the years revenue service में power घट गया. Yes, काफी they are doing a lot of automation, software based. They're trying to remove the public interface. Unless you go with ambition कि आपको गलत तरीका अपनाना है पैसे कमाने का, ठीक है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू इन आईआरएस. ठीक है, सो आईआरएस, बट यस कंपेयर टू आईआरएस द कस्टम्स एक्साइज में यू हैव गॉट मोर पब्लिक डीलिंग. ओके, बट एंड दैट्स आल्सो ए यूनिफॉर्म जॉब. कस्टम एक्साइज यूनिफॉर्म जॉब है. उसमें मैटर करता है कि पोस्टिंग कहां है आपका, बॉर्डर स्टेट्स में हो गया या पोर्ट रीजन में हो गया या फिर सेंट्रल कोई कैपिटल में. यू कैन एंटिसिपेट ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो ये 3 में जस्ट बी अवेयर. कस्टम एक्साइज डेफिनेटली हैज a uniform service, good amount of power, but then with that power also lot of challenges come in. Corruption issues are there, contraband, smuggling, but exciting भी है in terms of, so that's one. So police अगर है preference, okay, as a good one, so custom excise will make sense. Revenue service will always be powerful despite all the automation done. Ultimately, you will be taking a lot of audits, as a lot of inspections, and the rest will happen. But हाँ, उतना discretionary powers नहीं होगा आपका over the years. Audit account में there is no public dealing, but you are well connected. See, a very important aspect of your civil services is that the network that you develop. That's an important part of your job. Okay, and sometimes deputation, all of them go into some deputation or the other. बहुत कम jobs होंगे जिसमें कि deputation नहीं होता है. The revenue guy could be in some deputation of administration. Admission could be in some deputation of some other job. Delhi में आ गए deputation में. So audit accounts में काफी होता है. Delhi is one of the centers definitely. And I'm told that उनका hostel and training is very exciting. Okay. So the hill area में you have that facilities. So it's a nice close group of very well connected people. Okay, so audit account को नीचे मत डालना is my suggestion. Okay. Now services like defense estate देखो, then civil accounts service है. You can see 11 civil accounts, defense estates number 7. Now these are fairly decent services. Like a defense estate में you think that you are an administrator in a cantonment area. Okay, military वाला जो भी
फैसिलिटीज हैं, यू गेट अवेल दैट ऑल्सो। ठीक है, आर्मी या मिलिट्री या जो भी है आपका, यू गेट दैट। एंड दिस आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यू नो, उनका भी अपना स्टेट होता है, उनके सिविल इश्यूज होते हैं, यू टेक केयर ऑफ दैट। So a lot of people do not know about defense estate. Okay, I mean, if I'm going to equate, you are like an IAS officer in the defense cantonment area. Okay, and that's fairly influential also in some ways. But we hai कि ना, it's a small pocket, okay, couple of cantonments, so it's a decent job. Don't push it down just because you do not know this. And civil accounts is also fairly good. Okay, I mean, civil accounts, I will not say equated with revenue service and customs, but it is a good one, where again you see all the expenditure, budgets and the rest, they go through you. Very active role in, okay, how government is spending and the rest account jo hai, you'll have the role there. So don't push it down. Now, one group of services that I can definitely talk कि अगर आपको hardcore administration experience चाहिए is DANICS and DANIPS. Okay. Group B services है, but see, your role and your influence is almost equivalent to IAS and IPS, at least for the public. Service के अंदर में definitely IPS will have a strong, more important say. The IAS will have more important say, at least for the first 7-8 years. And by the time your service progresses, you are equivalent to most of them in 10 odd years. कभी 10 years के 15 years में, but हो जाता है. So if you're looking at administration role, policemen and administration में, I think DANICS and DANIPS are good enough. So yes. सर मैंने IFS को मुझे नहीं लेना है, तो उसको मैंने IRS नीचे रखा है. As good as आपने हटा दिया और क्या? ठीक है. That's your choice, no problem. So the moment we see it is 4th, 5th, I know कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो basically. But उसके लिए prepared रहना, what questions they might ask. लेटली मैंने देखा है बच्चों को सर्विस पे क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे इंटरव्यू में. okay, आज से 7, 8, 10 साल पहले पूछते भी थे, बट रिसेंट टाइम्स में आई हैव नॉट सीन टू मेनी क्वेश्चंस अराउंड कि ये कैडर क्यों लिया, वो स्टेट क्यों लिया, या सर्विस आपने ऊपर पूछा नहीं, देखा नहीं मैंने. सो गो फॉर व्हाटएवर यू. ठीक है, सो आई डोंट थिंक देखा जाएगा आंसर क्या करोगे, रखना रख लो, कोई बात नहीं. सो डैनिक्स एंड डैनिप्स एक अच्छा कैटेगरी ऑफ सर्विस है. सिमिलरली दिस डिफेंस स्टेट्स एंड सिविल अकाउंट्स भी अच्छा कैटेगरी है. इनमें ऊपर नीचे कौन सा करना है, दैट्स योर चॉइस. ओके, इफ यू लाइक इफ यू वांट हार्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरे ख्याल से ऑडिट अकाउंट रेवेन्यू के बाद में यू कैन पुट डैनिक्स डैनिप्स आल्सो. 7-8 में आ सकता है ये आराम से. या फिर यू वांट टू गो बाय द ग्रुप ए ग्रुप बी वाला, तो ग्रुप ए में आप ये डाल सकते हो, डिफेंस स्टेट्स एंड सिविल अकाउंट्स आप डाल सकते हो. नाउ ये 3 सर्विसेज हैं अबाउट विच, यस बताओ. My home state is Delhi. Can I put DANIS and DANIPS just after revenue services? Yes, you can. Tarun, you can put, no problem. But don't put DANICS, DANIPS just because home state is Delhi. Okay, that's a wrong way of choosing. You choose according to what type of role you want to get into. Okay, you can be in Delhi even with defense states. You can be in Delhi even with corporate service. You can be in Delhi even with civil accounts and even information service. ठीक है, तो Delhi होम स्टेट है इसलिए डाल रहे हो डैनिक्स डैनिप्स, दैट्स अ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ठीक है, आप डालो डैनिक्स डैनिप्स बिकॉज हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेशन का फील है, हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, and you are equated as IAS and IPS at least by the general public, and so that's good enough. Okay, promotion lately थोड़ा सा फास्टर भी हो गया है डैनिक्स डैनिप्स में, खासकर डैनिक्स में हो गया है. ठीक है, अदरवाइज दैट यूज्ड टू बी एन इशू अर्लियर. ठीक है, अदरवाइज अगर ईगो इश्यूज नहीं है कि मेरा ही बैचमेट आईपीएस है और मुझ पे दादागिरी कर रहा है टाइप का, दैट हैपेंस, या मेरा जूनियर है आईपीएस और मैं डैनिक्स में हूं, अगर वो ईगो इश्यूज नहीं है इन टर्म्स ऑफ रोल, डैनिक्स एंड डैनिप्स इज गुड रोल. देखो, रेलवेज डिस्पाइट प्राइवेटाइजेशन, यू अल्टीमेटली इट विल बी द गवर्नमेंट्स कैश काउ फॉर अ लॉन्ग टाइम.
ठीक है, 10-15 साल में मुझे लगता नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, लॉट ऑफ जूनियर रोल्स विल गेट कॉम्प्रोमाइज, बट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अभी भी सब्सटेंशियली इन द हायर मैनेजमेंट रहेगा। वैसे नहीं आईआरएमएस हो गया तो अब गवर्नमेंट ऑफिस कोई रोल नहीं, इनफैक्ट शायद थोड़ा बढ़ भी जाए। Okay, because then you become quite an important person to deal with the corporate entities also. Policy government ही बनाएगी। So railway as an important government service, it will remain. It will remain. ठीक है? So ये कैटेगरी एक हो गया। Now I said corporate law, trade service and information service. Okay. ये तीनों को, इन तीनों का ना एक्सपीरियंस बड़ा मिक्स रहा है। I've heard people who have been happy with their jobs, and I've also heard people कि बड़ा mechanical and वो it's a very not much action-filled jobs. Okay, but I'll still say कि trade service and corporate law, I think in times to come will become important. Although ये narrative last कुछ साल से रहा है, okay, because trade का role रहेगा, WTO will remain important, foreign postings भी इसमें होंगी. And as economy changes, इनका रोल भी चेंज होगा। But as of now, in general, थोड़ा सा क्या बोले, एक्टिव रोल इसमें कम है। ठीक है, बट यू कैन टेक अप, और इन तीनों में से इंफॉर्मेशन सर्विस नीचे कर देना। ओके, लेट कॉर्पोरेट लॉ एंड ये क्या है, ट्रेड सर्विस भी ऊपर रहे। ओके, एंड यू कैन पुश IIS बिलो। ठीक है, अच्छा, जो सबसे नीचे वाला कैटेगरीज है, I'll say will be a Pondicherry services, okay, and even armed forces headquarters वाला। now IR ये जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हालांकि यूनिफॉर्म जॉब है, but it's not really a typical police force. They are more concerned about the railway properties का protection. Okay, and not much of public dealing either. Okay, so but it comes with lot of benefits of railway service. Railways का अपना ही वो एक तामझाम है, एक within the service lot of benefits are there. Okay, but even then I will put it पर नीचे डालूंगा मैं. Okay, which is something like postal service. Okay, then maybe IRPFS, then maybe Pondicherry. Okay, and then probably armed force headquarters. The armed force headquarters wala, you can keep it as 19. Okay, so have I addressed bulk of, तो मैं generally services को ना 5 blocks में कर देता हूँ। First block is जो पहला मैंने 5 बताया, that's first block. Okay, second block में civil accounts, defense estates, DANICs, DANIPs. Okay, you can put it as second block. Third block will be okay, ये आपका ट्रेड सर्विस, सिविल अकाउंट, सॉरी क्या था, कॉर्पोरेट सर्विस एंड IIS को इन तीनों में थर्ड रखना। ओके, हालांकि when I remember information service was launched because of lot of media channels coming up and a lot of excitement था कि काफी कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा, बट हुआ नहीं। ओके, सो it is not as active as it could have been. And last group में to keep all of that I talked about. ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन तो ऊपर रह सकता है, then Pondicherry and the rest. ये अपना redundant हो जाएगा धीरे धीरे. So maybe after IIS you can put this post and Telegram जो भी है, Telegram service, ठीक है? Because धीरे धीरे this will become increasingly redundant. Okay, वो फिर डेपुटेशन वाला ही रोल ज्यादा रह जाता है, तो इसको आप नीचे ही रखो। Have I answered your service?